ভাৰতবৰ্ষৰ দীৰ্ঘ সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ অভিলেখ গঢ়িলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। পুনৰ আন এক অভিলেখ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দীৰ্ঘ সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ অভিলেখ গঢ়িছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ ইতিহাসত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰচিলে অভিলেখ। দেশৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘ সময় কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কাৰ্যকাল ২৬ মে ২০১৪ৰ পৰা আজিলৈকে ৪,৩৯৯ দিন সম্পূৰ্ণ হল। লৈ আহিছো সবিশেষ খবৰ। ইতিহাস ভংগ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অভিলেখ। পুনৰ আন এক অভিলেখ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। ভাৰতবৰ্ষৰ দীৰ্ঘ সময় প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ অভিলেখ গঢ়িলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। দেশৰ ইতিহাসত দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে নিৰ্বাচিত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু জৱাহৰলাল নেহৰুৰ অভিলেখ ভংগ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ শুভেচ্ছা বিভিন্নজনে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক। ইতিহাস ভংগ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আন এক অভিলেখ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আন এক অভিলেখ। প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যকাল ২৬ মে ২০১৪ৰ পৰা আজিলৈকে ৪৯৩ দিন সম্পূৰ্ণ হল। ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ ইতিহাসত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰচিলে অভিলেখ। দেশৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘ সময় কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী। জৱাহৰলাল নেহৰুৰ অভিলেখ ভংগ কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ শুভেচ্ছা বিভিন্নজনে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক। ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ ইতিহাসত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰচিছে অভিলেখ। দেশৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘ সময় কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কাৰ্যকাল ২৬ মে ২০১৪ৰ পৰা আজিলৈকে ৪,৩৯৯ দিন সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু জৱাহৰলাল নেহৰুৰ ১৩ মে ১৯৫২ৰ পৰা ২৭ মে ১৯৬৪লৈকে ৪,৩৯৯ দিন সম্পূৰ্ণ হৈছে। ইন্দিৰা গান্ধীৰ ২৪ জানুৱাৰী ১৯৬৬ৰ পৰা ২৪ মাৰ্চ ১৯৭৭লৈকে ৪,০৭৭ দিন হৈছিলে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অভিলেখ গঢ়িছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যকাল ২৬ মে ২০১৪ৰ পৰা আজিলৈকে ৪,৩৯৯ দিন সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে বিভিন্নজনে। हुए उसमें महिलाओं की इतिहास के पन्नों में केवल जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्रित्व काल का सबसे लंबा समय ही नहीं है नरेंद्र मोदी जी का, बल्कि लंबे समय तक इतिहास में जाने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने गरीबों की सेवा की है, देश की सेवा की है। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। इंदिरा जी ने जिस समय आई उस समय ये नारा दिया गया, इंदिरा जी को लाएंगे, गरीबी को हटाएंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटी। और नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को घर दिया। 81 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना से उनकी सेवा की। वही नहीं, शौचालय आज तक नहीं था, पानी नहीं था, स्वच्छ ईंधन नहीं था, उनके पास में गैस सिलेंडर नहीं था। ये जितने काम हुए, और 5 लाख का जो स्वास्थ्य के लिए भी दिया। अगर देश की सीमाओं पर देखेंगे, देश की सीमाओं को भी उन्होंने सुरक्षित किया, एक्सपोर्ट भी किया। अगर जो लोग रोजगार की बात, मैं कल एक कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे थे, 35 करोड़ EPFO नंबर है, वो रोजगार नहीं है तो क्या कौन सा नंबर है? मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने रोजगार भी दिया, 2.5 लाख स्टार्टअप हुए, उसमें महिलाओं की भागीदारी हुई। अगर मैं हरि अनंत हरि कथा अनंता
नरेंद्र मोदी को तब तक याद किया जाए, दुनिया में भारत के नाम को वहां तक ले जाने का काम किया जो जनमानस की इच्छा है। 2047 भारत का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। आज पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। हर भारतीय गर्व से कहता है कि हम भारत के हैं। ये सबसे बड़ी चीज हुई। जिस भी सेक्टर में आप ले लें, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर में नरेंद्र मोदी जी ने काम नहीं किया हो। अगर एक एक गिनाने लगूं तो आपको लगेगा कि ये इतनी लंबी फहरिस्त हो जाती है। आप इनोवेशन के सेक्टर में, आप रक्षा के सेक्टर में, आप रोजगार के सेक्टर में, सेमीकंडक्टर का नाम नहीं था। हमारे सेक्टर में 5 करोड़ से ज्यादा केवल गारमेंट सेक्टर में रोजगार देने का काम किया, टेक्सटाइल में। तो ये नरेंद्र मोदी जी की ही उपलब्धि है। भगवान करे कि नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हों और अभी 10-15 साल तक भारत का नेतृत्व करें। वो एक महामानव हैं। वो एक जिसको कहा जाता है कि अवतरित पुरुष हैं। ये देश की सेवा के लिए आए हैं। कांग्रेस जब से आई तब से घोटालों में रही। नरेंद्र मोदी की सरकार उम्मीदों से घिरी रही। दूसरी सरकार, यूपीए सरकार, विवादों में घिरी रही। यही अंतर दोनों सरकार का रहा। इतिहास के पन्नों में केवल जनप्रतिनिधि के रूप में